Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining topic of nucleus. So let's move to the class board. So nucleus So we were discussing the components of nucleus. So वहीं से start करते हैं. Components of nucleus. So dear students, there are 4 components of nucleus. Namely, number 1 is nucleoplasm, which we have discussed in the previous lecture. It consists of the soluble sap, okay, of nucleus. Okay. Number 2, we have discussed the nuclear envelope, or the nuclear membranes, clear? उसमें inner membrane and outer membrane, nuclear pores, number of nuclear pores, their importance, their shapes. And now number 3, third part, important part is the nucleolus. The nucleolus, clear? Dear students, nucleolus को डिस्कस करने से पहले 2 चीज़ें आपसे शेयर करता चलूँ. First thing that the nucleus can only be seen in a non-dividing cell. Okay? कोई ऐसा सेल जिस पे अभी सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई या जो रेस्टिंग कंडीशन में है, तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आ सकता है. ठीक है? इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, there are no chromosomes visible. Rather, there are visible thread-like structures or thread-like material called chromatin. It is called chromatin. Clear? So, एक नॉन डिवाइडिंग सेल में डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस तो नज़र आएगा, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते, बल्कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, हमें मटेरियल नज़र आएगा, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं. क्लियर? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, the nuclear membrane ruptures and the nucleus
is not visible. तो एक डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ड्यूरिंग प्रोफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स दे आर डिसरप्टेड, दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड, तो उस वक्त जो है हमें न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा. एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमैटिन condenses into chromosomes. Clear? तो जो क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक मटेरियल था वो कंडेंस करके क्रोमोसोम्स बना देगा. सो दैट वाज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एमसीक्यूज. नाउ द न्यूक्लियस. सो इन न्यूक्लियस there is present non-membranous darkly stained body called nucleolus. Clear? तो न्यूक्लियस के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड डार्कली स्टेन्ड बॉडी एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. एंड डियर स्टूडेंट्स, द न्यूक्लियोलस is the site or structure where ribosomal RNA, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के एंड सेकेंड लास्ट टॉपिक में, ठीक. तो ribosomal RNA is synthesized and stored. क्लियर? यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज भी होगा और स्टोर भी होगा. क्लियर? एंड द न्यूक्लियस may contain one or two nucleoli. एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है या फिर दो भी हो सकते हैं न्यूक्लियोलाई. ठीक है. नाउ द रीजन्स of nucleolus. So as far as regions are concerned, so there are two main regions. Two main regions in nucleolus. Number one is the central fibril area. The central fibril area, it contains heavy molecular weight RNA and ribosomal DNA. Clear? And the second region is peripheral granular area or region that contains precursors of ribosomes. Clear? That contains the precursors of ribosomes.
नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ताकि सारे जो कुछ भी अब तक हमने पढ़ा उसको क्लियर किया जा सके. So this is the diagram of nucleus. The nuclear pores. These are the nuclear pores, and that is the outer nuclear membrane, the inner nuclear membrane. Here is present the dark stained non-membranous body, that is the nucleolus, and it contains just in order to complete its the contents. मैं यहाँ पर क्रोमोसोम शो कर रहा हूँ. अदरवाइज हम बात कर चुके हैं कि नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम नहीं बल्कि जिस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, थ्रेड लाइक मटेरियल नजर आएगा. And also there are present some ribosomes and enzymes. So this is the structure of nucleus. This is outer nuclear membrane, and this one is inner nuclear membrane, and these are the nuclear pores. That one is chromatin, and this is the chromosome. Nucleolus, and the ribosomes. Yeah. And now here I'm going to draw the nucleolus. Now this is nucleolus. Central fibril area and the peripheral granular region. Clear? This one is peripheral granular area or region, which consists of the precursors of ribosomes, and this is the central fibril area. Yeah, so this is the structure of nucleolus. अब आते हैं स्टूडेंट्स, अब मज़ीद
अगले टॉपिक की तरफ। एक और चीज़ याद रखिएगा, द क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ number 1 DNA, and number 2 is the protein. Protein is the histone, clear? Histone protein होती है, up to 40% is DNA and up to 60% it consists of the proteins. And dear students, now the fourth part, that is the chromosomes. There's the fourth portion of the nucleus, the fourth component. The first one, nucleoplasm. The second is nuclear envelope. The third one is nucleolus, and the fourth one is chromosomes. So the condensed chromatin is called a chromosome. ठीक है, और जो जब chromatin जो ये इस तरह से, so this is thread-like material which is called chromatin, and when it condenses, it forms, तो इस तरह से कंडेंस हो रहा है, सिकुड़ रहा है. So this becomes a chromosome. Clear? So this is a chromosome. Or chromosome, dear students, these are the short arms, and these are the long arms. Clear? And that point is centromere. Clear? So the chromosome, it consists of a centromere, it is basically the condensed portion of chromatin where the chromatids are attached, जहाँ पर chromatids attach होते हैं, and centromere has a protein called kinetochore, where spindle fibers are attached. Clear? तो ये let's suppose these are the two chromatids. तो ये chromatids आपस में अटैच है अंदर से सेंट्रोमेयर से, और इसी सेंट्रोमेयर की एक्सटेंशन होती है बाहर की तरफ, जहाँ पर आकर स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना होता है. ठीक है, उसे कहते हैं काइनेटोकोर. क्लियर? और इसी तरह से द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच organism is specific, it is fixed. So in humans, number of chromosomes, it is important regarding the MCQs. In humans, the human contains 46 chromosomes. Clear?
chimpanzee contains 48 chromosomes. Potato, it contains 48 chromosomes. The fruit fly, which is called as Drosophila melanogaster, as it is biological name, we have to underline it. So it contains 8 chromosomes. Clear? And the garden pea, it consists of 14 chromosomes. As far as frog is concerned, Rana tigrina, it consists of 26 chromosomes. Clear? And dear students, a number of other examples are also here. So these number of chromosomes are important regarding the MCQs. Dear students, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने यहाँ पर लिखा है, ये सोमेटिक सेल्स के अंदर है. हम इससे प्रीवियस भी बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से. वहाँ पर हमने बात की थी कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की. ठीक है. सो डिप्लॉयड सेल किसे कहते हैं? जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं. ये कॉन्सेप्ट सारी ज़िंदगी आगे काम आना है. इसको प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि ये आपको क्लियर है. डिप्लॉयड सेल, ऐसा सेल, the cell having paired chromosomes, इसमें chromosomes paired होंगे, उसे कहते हैं diploid, and it is represented by 2n. Clear? जैसे कि हमारे जितने somatic cells होते हैं, like the skin cell or the ear cell or the heart cell, all these are diploid cells. And number 2 is the haploid cell. तो ऐसा cell जिसमें unpaired chromosomes होंगे, that have unpaired chromosomes. Like the gametes means the sperms or the egg cells, clear? And all the somatic cells. So that is the example. So dear students, hopefully न्यूक्लियस क्लियर हो गया होगा आपको. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.